Okay, welcome to a new video. This video is about numerical differentiation, which is based on Newton backward difference formula, which will be explained through calculator and MATLAB coding. Okay, at the beginning we talk about derivation of numerical differentiation formulas. So you know that xp and x can be used interchangeably. या तो हम x को यूज करते हैं या हम xp को यूज करते हैं, इससे कोई मसला नहीं होता. Right. For equally spaced data, you know that x जो होता है इसको हम लिख सकते हैं x naught plus ph और fp correspondingly f of x naught plus ph होता है, जिसको हम ऑब्वियसली लेके आते हैं. अगर न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करेंगे तो डिफरेंट फार्मूला है इसके लिए, और अगर हम बैकवर्ड को यूज करना चाहते हैं तो आपके पास अलग फार्मूला है. And obviously we have talked about in last video about the suitability of backward difference formula or forward difference formula. जो unknown value x है, या अगर हम differentiate करना चाहते हैं x equal to something or x equal to xp equal to something, तो अगर वो वैल्यू टॉप पे है तो फिर हमारे पास ये है कि सुटेबल जो वैल्यू है, सुटेबल जो फार्मूला है वो न्यूटन फॉरवर्ड है. अगर वो बॉटम में है तो सुटेबल फार्मूला है वो न्यूटन बैकवर्ड है. एंड अकॉर्डिंगली अगर सेंटर में सेंट्रल डिफरेंस बेस्ड फार्मूला है. The setup is what we basically want to differentiate fp with respect to x, and हमें पता है कि fp जो है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो p होता है. सो एक तरीका तो ये है कि हम p को रिप्लेस करें विद x. जो एक्सप्रेशन हमारे पास p के लिए आता है दैट इज x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाय x. जो न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला है उसमें जहाँ कहीं पे भी p है उसको रिप्लेस कर देंगे x माइनस एक्स नॉट बाय h, और फिर उसके मल्टीप्लाई करके उसमें पावर अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई प्रोडक्ट हो जाए, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी एक्सप्रेशन बन जाएगा. इसलिए इट्स बेटर कि हम क्या करें fp जिसमें p डिपेंडेंट वेरिएबल है और p जो है वो फिर डिपेंड करेगा x पे, तो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे चेन रूल को. ओके, यानी fp को डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू p और p को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x. So first we find what is dp by dx, and x is equal to x naught plus ph. If we differentiate x with respect to p, what would happen? You would simply get p from here, and then dp by dx, it will be 1 over h. So therefore d by dx of fp, it will be 1 over h, and d by dp of fp, okay, because we just put the value of dp by dx here, which is equal to 1 over h. So value हमने यहाँ पे put कर दिया, right? And the same thing can be extended for second order as well. The second order derivative will be what? You see, that is 1 over h square d square by dp square fp. आपने इस fp को दोबारा differentiate करना है with respect to p, and because of the derivative again you have to multiply with 1 over h. And similarly for third order आपने इसको फिर से differentiate करना है और एक और h को increase करना है. इधर से we are having 1 over h cube d cube by dp cube fp. अगर हम फोर्थ ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं तो 1 by h power 4 d4 by dp 4 fp and so on. Okay, so if you come to a specific Newton backward, we know from Newton backward difference formula we are having fp, which is can be defined for different values of x and y. For x equal to x naught, if you have y equal to y naught, for x equal to x1, you have y equal to y1. For a specific function, y is equal to f of x. This function will not be obviously given, or it will not be known as explicitly. इसकी tabulated value आपको given होगी. And then in previous video we have already derived this formula. It looks similar as what we had in case of Newton's forward difference formula. वहाँ पे हमने यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंसेस यूज किए थे और यहाँ पे ये नोटेशन डिफरेंट था. इट वाज pp माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड नेबुला स्क्वायर है वहाँ पे डेल स्क्वायर था एंड सो ऑन. बाकी स्टेप्स अपने वही करना है. इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग देम टुगेदर, तो वी हैव pp into p plus 1, that is p square plus p. We'll simplify this, so it is we see ये अपनी जगह पे आएगा और यह जाएगा p square plus p. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो p cube plus 3p square plus 2p divided by 3 factorial and so on. Okay, obviously we're taking finite number of terms because हम
इंटरपोलेटिंग पॉलिनॉमियल्स की बात कर रहे हैं। अब इसको आपने क्या करना है, इस वाई पी को या एफ पी को जो भी आप कह रहे हैं इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट करना है, विच कैन बी डिफरेंशिएटेड वेरी इजीली बिकॉज यहाँ पे हर एक टर्म में हमने पावर रूल को यूज करना है। तो इट्स डी वाई पी बाई डी पी, वाई नॉट इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव विल बी जीरो, पी की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, सो वी हैव नेबुला वाई नॉट प्लस दिस इज 2p plus 1 divided by 2 factorial nebula square y naught plus 3p square plus 6p plus 2 divided by 3 factorial nebula cube y naught plus so on. And now we know the formula is to convert dyp by dp into dy by dx, because we're interested in finding derivative of y with respect to x. So that would be 1 over h into dyp by dp. The value was found and we simply put this value here. We have taken up one extra term as well, तो इसमें आप वरी ना हो कि ये टर्म कहाँ से आ गया, ये हम बेसिकली उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसको भी हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अगर आप आगे जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर में, तो ऑब्वियसली आपने ये आगे टर्म्स भी लेने होते हैं। ओके, यहाँ पर एक बात नोट कर लें आप, वो ये है कि अगर हम डेरिवेटिव्स फाइंड करना चाहते हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, keeping this in mind, an interpolation or p was between 0 and 1, ठीक है, बिकॉज उसमें इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। अगर आप p इक्वल टू 0 करेंगे इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट टेबुलेटेड वैल्यू, और टेबुलेटेड वैल्यूज के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू पता होती है, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो उसमें वी आर आल्सो इंटरेस्टेड यूजुअली टू फाइंड डेरिवेटिव एट टेबुलेटेड वैल्यू एज वेल। तो उस केस में फिर हमारे पास p क्या हो जाता है, वो 0 के बराबर भी हो जाता है। Okay, so when we have x, our xp, if that is a tabulated value, anything given in the table, so mean to say it might be an x naught or x1 or x something, तो उस केस में हमारे पास जो p होगा that will be simply 0। okay, वो 0 आपने लेना है। तो जब आप यहाँ पे 0 लेंगे इसका मतलब है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, you will simply put 0 here at in the second term, you see here, you will put p0 here, and in the next term, and so on. So in this case, you will get 1 by 2, you will get 1 by 3, you will get 1 by 4, and so on. लेकिन उस केस में होता है जब हमारे पास डेरिवेटिव आपको फाइंड करनी हो एट अ टेबुलेटेड वैल्यू। अदरवाइज फिर हमें p फाइंड करना होता है वही x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई h के फार्मूला से, और वो p की वैल्यू फिर हम यहाँ पे पुट करते हैं। अच्छा जी, we can move towards second order derivative as well. The same concept will be used as I said earlier. आपने क्या करना है, अब इसको with respect to p डिफरेंशिएट करना है और ये 1 by h को आपने 1 by h square बनाना है। So d square yp by dx square, which will be obviously d1 over h square, d square yp by dp square. It's 1 over h square and d by dp of this function, जिसको आप इसी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Now this is constant, so derivative is 0, and 2p plus 1 derivative is 2 divided by 2, which give you 1, so we have a nebula y naught, and the derivative of this one, 6p plus 6 divided by 3 factorial, which is 6, and then we have nebula cube y naught. So if we differentiate this, we get this one, you see, ये खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया, और इसके बाद फिर इसकी derivative, इसके बाद फिर इसकी derivative. And the same thing can be extended for third order derivative as well, and then fourth order derivative as well, and so on so on. आप बार बार इसको p के साथ डिफरेंशिएट करते जाएं और साथ में 1 over p लगाते जाएं। ओके, बाज़ औक़ात ये नोटेशन भी इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, जैसे हम यहाँ पर x नॉट यूज़ किया तो बाज़ जगहों पे हम इसके लिए xn भी यूज़ करते हैं। So it doesn't affect the calculations because just label x, just to differentiate कि हम बैकवर्ड में xn को यूज़ कर रहे हैं because हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, बॉटम में हम वैल्यू ले रहे होते हैं, जबकि न्यूटन फॉरवर्ड में फिर हम x नॉट को यूज़ कर रहे हैं। So it should not be confused with that if it is xn or x नॉट, it doesn't matter. Right, अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। So let's talk about the value of derivative of this function at x equal to 1.5. Now you see it's a tabulated value, it's 1.5 here. Okay, so in this case p will be 0. Okay,
अगर इनके बीच में लेट्स सपोज 1.09 है 1.05 है तो यू विल यूजिंग फॉरवर्ड सेटअप. अगर यहाँ पे 1.51 है 1.52 है तो वी आर यूजिंग बैकवर्ड सेटअप. और इसके लिए फिर आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी होती है बाय यूजिंग फार्मूला x माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय h. यहाँ पे वही 0.1 है. And now we will be constructing difference table first. In previous videos, I already explained how to construct difference table by using calculator and by using MATLAB coding. I'll just you can go back and watch that video. अगर आप ये सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी. अगर आप एक सीरीज देख रहे हैं सारे तो आपको पता होगा कि आपने how do we construct difference table by using calculator. Okay, so in this case you see that हमने ये x naught ले लिया या xn ले लिया, doesn't matter, and this is yn. Then this will be first order difference, backward, second order backward difference, third order backward difference, and so on. And then we put all these values as I've done earlier. I said p will be 0. When p is 0 we have nebula yn. It was 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, and 1 by it's 1 by 5. It's nebula 5 yn by 5. Now putting all these values, we get this derivative to be 2.8845. And now I'm explaining that how do we do this by using calculator. So let me open the calculator. I'll be using a backward formula for interpolation when we do numerical differentiation. Okay. So the basic concept is same. What would we do? Again, in this case, h is what? That is 0.1. And if you take its reciprocal, it will become what? It will become simply 10. Because you simply say, if you divide 1 by 0.1, so it will be 10. It means जब मैं ये फार्मूला यूज करूँगा तो 1 by h की जगह मैं क्या करूँगा? I'll be putting h equal to 2.1, so 1 by h will be 10. Okay. अच्छा, अब इसमें जो फार्मूला हमारे पास आता है वो क्या हो जाएगा? I'll simply take 10 and then multiplied by okay, अब derivative में चाहिए तो d by dx. Okay, and then we'll be taking different values. हम इसको a कह देंगे, इसको b, इसको c, इसको d, इसको e, इसको f, whatever आप जो value जो label करना चाहें आपके मर्जी है. So first we have fn, if you remember from formula, the interpolation formula. उससे फिर आपको multiplication की जरूरत नहीं होती कि आप multiply करें तो इसको derivative में आप डायरेक्ट इसको सिर्फ put कर सकते हैं. अच्छा, तो इसमें हम पहले a लिख लेते हैं. Alpha, and then we have a here, and then we have plus, and then we will be having b, which is the first order difference, keeping in mind, multiplied by x. Okay, x keeping in mind ये p है यहाँ पर again. Okay, so next is then we have c, that's the second order difference, multiplied by x into x minus 1, because we know that p into p minus 1, so we are using the x instead, so it's x, then we take bracket, then we take x again, and now it's x plus 1. Then closing the bracket, divided by 2 factorial, which is 2. And then we go to the next term, and again we take d. D is what? That is the third order difference, this one. And d multiplied by x multiplied by x plus 1 multiplied by x plus 1 multiplied by x plus 2. And then we have divided by 3 factorial, which is 6. I'll take divided by 6. Then in next time we will take e and then multiply by x, x plus 1, x plus 2, x plus 3, divided by 4 factorial, which is 24. So we can obviously extend that. जितने टर्म्स तक आप चाहते हैं आप कर सकते हैं.
अच्छा, अब यहाँ पर जो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू व्हाट, देन डायरेक्टली यहाँ पर जो हम एक्स की बात कर रहे हैं वो बेसिकली पी है, तो इस केस में पी की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। या यू कैन सिंपल टेक एक्स एज वेल, डजंट मैटर, वी मे टेक एक्स, बिकॉज अगर आप चेंज करना चाहें तो वो कर भी सकते हैं डिफरेंट टाइम पे, तो आप इसको एक्स कह रहे हैं, जनरलाइज हम कर सकते हैं इसको। अब इसमें हमने कैल्क के बटन यूज करना है। यू विल गिव द वैल्यू ऑफ ए विच इज दिस वन 9.750, इट्स 9.750, that's the value of x, and then we have f जिसको हमने a कहा है। अब ये b मांग रहे हैं, इसे b का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, दैट इज 0.299, ओके, एंड देन जस्ट प्रेस इक्वल। अब x है तो x को हम 0 ही देंगे, 0 ले रहा है तो 0 देंगे, p 0 है। c जो है वो फिर ये वैल्यू आ जाएगी -0.003 and then we'll be giving the value of t, which is third order difference, that is 0.003. Okay, and then simple put this inside, so we get to see 2.885. I think it is okay. Have 2.885 there. Yeah, see like this one. So अगर आप इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ डिफरेंसेस को तो ये और भी इस तरह वैल्यू होगी। The same thing can be done for second order derivative as well. Okay, and now I'm explaining that how do we do that by using MATLAB coding. तो MATLAB coding जो है वो भी सेम है जिस तरह से हमारे पास न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला था। इसमें हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम सिंबॉलिक नोटेशन यूज़ करेंगे। हमें एफ पी चाहिए सिंबॉलिक, मतलब उसमें पी वेरिएबल आएगा। वैसे तो मैटलैब जो मैट्रिसेस पे काम करता है, लेकिन वी कैन डू सम सिंबॉलिक कैलकुलेशन इज वेल। उसके लिए आपको ये कमांड यूज़ करना होता है पहले कि SYMS, तो आप फिर जो भी वेरिएबल देंगे उसको सिंबॉलिक कंसिडर करेगा। एंड देन पी इज आल्सो कंसिडर टू बी सिंबॉलिक, सो वी आर टेकिंग SMS FP and then P. Okay. And now you see this is for the difference table, so we construct difference table here. From here onward we talk about the difference table construction. So we first assign a specific matrix for it, जिसकी length जो होगी यानी जिसकी size होगी जितने वेक्टर x है और जितने इसमें आपको डिफरेंस लेना है। अगर आपको 4th ऑर्डर डिफरेंस लेना है तो आप 4 लिखेंगे, 5th तक है तो हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं तो सर 10th ऑर्डर तक जा रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप इसको वेरिएबल के तौर पे यूज़ करें और फिर आप उसको वैल्यू दें। तो इनपुट में हमारे पास x आएगा जो कि आर्गूमेंट्स हैं, और एफ एक्स जो है वो बेसिकली y की वैल्यू है, और एक्स पी ये वो नंबर है जहाँ पे हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं। अच्छा, अब इसी जो डी टी हमने लिया था डिफरेंस टेबल, उस डी टी का जो फर्स्ट कॉलम है दिस इज 1, हम कह रहे हैं भाई फर्स्ट कॉलम में आप मुझे x दे दो, सेकंड कॉलम में आपने मुझे क्या करना है, बिकॉज ऑफ दिस 2 मींस दैट सेकंड कॉलम ऑफ दिस डी टी, उसको हमने फंक्शन की वैल्यू देनी होती है। एंड यू मस्ट रिमेंबर हमारे पास जो डिफरेंस टेबल होता है इसकी फर्स्ट कॉलम में हमेशा के लिए हम क्या ले रहे होते हैं, हम x की वैल्यू होते हैं, और सेकंड कॉलम में फिर y की वैल्यू है, थर्ड कॉलम में फिर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस आता है। तो टू डू दैट यू सी स्टार्ट फ्रॉम j इक्वल टू 3, दैट मीन्स कि आपने थर्ड कॉलम से शुरू करना है और हमें थर्ड कॉलम की वैल्यू चाहिए, और ये जो लूप है वो असल में वो वैल्यूज को सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डी टी आई जे, दैट मीन्स अगर आपने ith रो लेना है jth कॉलम तो आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, प्रीवियस जो वैल्यूज है से उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो नेक्स्ट वैल्यू से। तो ये असल में क्या कर देगा, ये डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर देगा। यहाँ से हम n को रिप्लेस कर रहे हैं बिकॉज अगले बार जो है वो नंबर ऑफ डिफरेंसेस कम होते जाते हैं, एक एक स्टेप कम होता है। अगर फर्स्ट रो में आपके पास लेट सपोज 10 डिफरेंसेस हैं तो नेक्स्ट में आपके पास 9 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 7 होंगे। तो इसलिए हम n को n-1 से रिप्लेस करते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम n को 1 से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट टाइम वो n होगा जो आपके पास 2 तक जाएगा, फिर 3 तक जाएगा, एंड सो ऑन। ये आपने करना है। तो इट विल बेसिकली गिव यू अ डिफरेंस टेबल एंड देन वी चेक डिफरेंस ऑफ सेकंड और एंड फर्स्ट, जिसमें आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। और फिर ये जो हम सेटअप करते हैं कि जब आप एक्स पी दे दें, दो तरीके हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट फिर से पी की वैल्यू फाइंड करके उसको दे दें, या आप इससे कह दें कि भैया पी की वैल्यू फाइंड करो। लेकिन पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सेटअप देना होता है कि भाई ये वैल्यू कहाँ पे होगी, तो आपको पी कैसे डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर हम वही चीज़ कर रहे हैं, ये सेटअप पे अगर पी जो है हम पहले क्यू को डिफाइन कर रहे हैं,
विच इज xp माइनस xi डिवाइड बाय h, वेयर xi ये हर एक वैल्यू के साथ चेक करेगा। ओके, इट विल चेकिंग विद एवरी वैल्यू। ओके, और जब ये कर देगा तो इसके बाद फिर क्या होगा, वो देख लेगा क्या q 0 और 1 के बीच में है कि नहीं। हम इक्वल भी ले रहे हैं, उसमें इक्वल लेने की ज़रूरत नहीं होती इंटरपोलेशन में। और फिर इसका हमने P1 का, अब P1 के बेस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा हमने x नॉट लेना है या x1 लेना है, और कौन सा हमने f नॉट लेना है और उसके डिफरेंस लेना है। तो उसके लिए ये वैल्यू हम फाइंड करते हैं कि भाई इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, और जो भी किसी भी इसके वैल्यू के बराबर आ जाए एल की वैल्यू, तो आप क्या कर दो, उसी को क्या कर दें, कंसिडर करें एज एक्स नॉट, और फिर उसी के आपने एफ नॉट और करस्पॉन्डिंग डिफरेंसेस लेने होते हैं। तो एफ एक्स आर दैट्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, दिस इज सेकंड डिफरेंस फॉरवर्ड, बैकवर्ड, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। और आखिर में जो फार्मूला हमारे पास है वही एफ नॉट close it, it's just closed, so I can open it again. Okay, so this is fr and so on, see, f naught plus p del f naught nebula f naught plus p plus 1 multiplied by nebula square f naught, the second order backward difference, third order backward difference, and this is the fourth order. Next one will be obviously, अगर आप यहाँ से पहले find करेंगे f05, तो it will be r minus 5 into 3 plus 4 accordingly आपको आगे लेके जाना होता है। ओके, अब जब इसको हम रन करेंगे, when you run this one, what would happen, you need to have something known before you run this code, और वो है x और y की वैल्यू। लेट मी डिफाइन x विच इज़ फ्रॉम 1 to 1.6, जो आपने एग्जांपल लिया हुआ है, तो आ जाएगा वो हमारे पास। एंड व्हाट अबाउट y आर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, इसको आप सिंपल पुट कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और आपने इसको एंटर करना है, तो हमारे पास x और y अब दोनों मौजूद हैं। अच्छा, अब हम क्या करना है, हमने आपकी मर्ज़ी, आप टाइप करते हैं, इधर से कॉपी करें इस फर्स्ट कमांड को या फर्स्ट लाइन को, कंट्रोल सी एंड देन वी हैव कंट्रोल वी। अब इसमें हमने एफ एक्स को बेसिकली वाई का, आई कैन कॉल इट एफ एक्स एज वेल, डजंट मैटर वेरिएबल नेम, और एक्स पी जो है हम फाइंड करना चाहते हैं इसकी डेरिवेटिव एट 1.5, तो पी की वैल्यू ऑटोमेटिकली वो जीरो लेगा वहाँ पे जब वो यूज़ करेंगे, हम आखिर में जीरो लेने वाले हैं। तो ये आपको एफ पी सिम्बॉलिक देगा, पी सिम्बॉलिक देगा, और एच की वैल्यू भी ये फाइंड कर देगा। सो इफ़ यू रन दिस इट विल गिव यू, सी एच इज़ 1, और बाकी जो एफ पी तो पी आ जाएगा बिकॉज सिम्बॉलिक ही है, और आगे हमारे पास ये एफ पी आ गया जो कि अब वो बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ध्यान में रखें कि ये न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो कि इंटरपोलेशन के लिए होता है, लेकिन हमें इसके डेरिवेटिव चाहिए। So maybe you can take df by dt dx. Let's take df. That is equal to, now it will be 1 over h multiplied by, again we use this command subs, which basically substitute the value in symbolic functions। अगर आपने कोई भी फंक्शन symbolic डिफाइन किया हुआ है और आप उसमें वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो हम ये कमांड यूज करते हैं। ओके, लेकिन हमें इसकी पहले डेरिवेटिव चाहिए, तो डिफ कमांड हम यूज करते हैं डेरिवेटिव के लिए। एफ पी की डेरिवेटिव लेगा ये विद रिस्पेक्ट टू पी, और फिर हम पुट करेंगे पी की वैल्यू 0, बिकॉज हम एट एक्स इक्वल टू 1.5 हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जो कि टेबुलेटेड है, तो पी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो वी हैव दिस बिग वैल्यू, जिसको हम अगेन वही ई वी एल कमांड हम यूज कर सकते हैं। Now I have labeled df to that value. If I input, I'll get 2.8825, and similar to what we had at 2.5545. Right? It's 25 obviously, लेकिन हमने वही number of differences जो है वो पूरे नहीं लिए, वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। Okay. I hope it's clear to everybody. Thank you very much, and see you in next video. If you have any question, any query, simple just send me that question in the comments box. I'll get back to you. Thank you very much.